OGTT measures the body's ability to use the glucose. Okay, that is the body's main source of energy. Glucose is the main source of energy at the end. And OGTT can be used to diagnose the impaired glucose tolerance. I'll tell you about this later on. What is impaired glucose tolerance and what is diabetes? Okay, it is used to test for diabetes, insulin resistance, impaired beta cell function, and acromegaly. Do you know about acromegaly? Anyone? HGM related. Those. अच्छा ठीक है दूसरा कौन है anyone else Oversecretion of the growth hormone. From where he is right oversecretion of growth hormone from where an OGTT test is mostly done to check for diabetes that occurs with pregnancy, that is gestational diabetes, GDM. Write it down. It is used in diabetes, insulin resistance, impaired glucose tolerance or function, and acromegaly. Who needs glucose tolerance test? There must be a purpose to do. Like the women who get pregnant, we have to find it out that she got GDM or not, means gestational diabetes, for various reasons like eclampsia, preeclampsia. So when she first come, the first antenatal visit means the first when you encounter the pregnant women in your OPD or IPD or anywhere, you have to do one test, and another one is done at 24 to 28 weeks of pregnancy. 2 times we have to find it out. Doctor may also recommend that someone have this test if they are having the symptoms of impaired glucose tolerance or diabetes, or had gestational diabetes during a previous pregnancy. It can be also previous history in the women with also history of previous GDM, means it can be her second pregnancy and she had previously GDM. So we have to also evaluate this time also. It's a temporary, so we have to evaluate her again. Have previously given birth to a baby who weighed more than 4 kg to 4.5 kg, means the baby was big, macrosomia. Usually the weight of a baby is 2.9 in Indian setup, Indian audience. 2.9, okay. 2.5 is the bare minimum. 2.5 is bare minimum for babies, okay. It is low birth weight. It's a MCQ for your knowledge. Overweight before getting the pregnancy means the some women are obese. BMI is more than 23 in Indian setup, or in foreign setup it is 25. The BMI, basal metabolic index. Write it down. How to prepare the subject? Subject means the patient. Eat a balanced diet that contains at least 150 grams of carbohydrate per day for 3 days. Okay, fruits, bread, cereals, grains, rice, crackers, starchy vegetables such as potatoes, beans, corns are good sources of carbohydrates. Simple carbohydrate. These sources are simple carbohydrates like fruits, breads, rice, white rice, basically. And she or he have to avoid smoking, drinking, exercise, strenuous work for at least 8 hours before you fast. The fast blood sample is taken, means 8 hours of good sleep. Tell the doctor about all prescription and non-prescribed medicines you are taking, like diuretics, corticosteroids, synthetic estrogen, phenytoin. Doc may instruct to stop taking certain medicines before the test.
Glucose tolerance test, diagnostic test may take 3 to 4 hours. It's a lengthy process. You have to take 6 samples, one in fasting, one, and then after every half an hour we have to take more 5 tests. We'll discuss it later on. Since the activity can interfere with the test results, you will be asked to sit quietly during the entire test. Do not eat during the test, only the mixture. You may drink only water during this time. Write it down. Any questions? Action center until the procedure is completed. Bring some reading material or other activity to pass the time. If feel unwell during the test, please inform the doctor or the nurses, whoever is present at this moment. There should be no acute significant illness for 2 weeks, like fever or there is diarrhea or anything. Due to the nature of the test, testing is generally done in the morning. Before drinking the glucose, please inform the collection staff if they have any allergies towards glucose or anything. Like, it's normal. OGTT, overnight fasting for 8 hours. A blood and urine sample is collected in the fasting state. Glucose load, 75 grams of anhydrous glucose, flavored if possible. Flavored with what? With Coke? With Coke? No, flavored with like mixing some ice or some lemon. Fixed dose for children is 1.7 gram per kg as per body weight. Full adult dose should not have been given to a person whose weight is less than 43 kilogram. Or exaggerated glucose may produce false positive result. Asked to drink slowly in 5 minutes. Flavoring decrease the vomiting, means mixing some iron or mixing some ice or lemon. 2 things. Without flavoring it's also okay ना. पेशेंट अगर खा पाता है 300 ml का वाटर तो खिला दो, मगर 300 ml का वाटर पीने में थोड़ा तो दिक्कत होगा ना, थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा आइस, थोड़ा ठंडा कर दो. Sample collection. Fasting blood and urine sample is collected before giving the glucose load. Only one. एक ही होगा जो फास्टिंग, मैंने वो मिक्सचर देने के पहले हम लेंगे, उसके बाद लेंगे दूसरे वाला आधे घंटे बाद. Every half an hour blood and urine sample is taken for next 2.5 hours. Total 6 samples. 1 before taking the mixture, means in empty state, and 5 after that, every half hour. And you have to take the drink in within 5 minutes. That is also important. The OGTT is considered one of the most effective way to determine the cases of GDM, gestational diabetes mellitus. Managing sugar level decreases the chances of baby going larger for the dates. Managing the sugar level may decrease the risk of intervention in labor or birth. अगर बच्चा बड़ा हो गया तो उसको नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी में आसानी होगी कि दिक्कत होगा. The normal GTT graph. See, fasting में हमारा कितना कम हो गया? There is only 70. After 70, the pancreas stop the production of insulin. See, after half an hour, taking the mixture of 75 gram of anhydrous glucose with the water, the glucose is increasing, taking up the glucose to the wire cells. Then it's again increasing up until 1 hour, 150. Then after 1.5 hour, it's decreasing. Decreasing why? Decreasing why? You are taking breath now. Sitting, you are sitting, but you are taking breath. You are thinking. The glucose is utilizing. That's a normal process now. Glucose will be get utilized. See, have the dip, and again rise. Rise due to the it's cross the benchmark of 70, where a pancreas stop the production of insulin, and there is a production of glucose from the
liver, to counter the what? The dip in glucose, because you already caused the cut mark of 70. But in case of severe diabetic carb, there is a dysregulation of glucose, risk of OGTT. There is the serious risk, but minor risks are there, like nausea, discomfort, diarrhea, constipation, bloating and headache. These are minor things. In terms of type 2 diabetes mellitus, these things are very much important for your family member. Classical symptoms of type 2 diabetes mellitus: polydipsia. What do you mean by polydipsia? Anyone? Tell. जोर से बोलो. Diabetes, too much thirstiness, is called polydipsia. What is polyuria? What? Tell, बोलो ना. एक से बोलो, कोई दिक्कत नहीं. गलती होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं. बोलो. Excess urge going to the वॉशरूम. आपको क्या लगता है कि एक्सेस आरजी है सिर्फ, उसका यूरिन प्रोडक्शन होता है तब हो ना? यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसलिए हम वॉशरूम जाते हैं. उसका अर्थ नहीं है, वो तो दूसरा हो जाएगा ना. कुछ है नहीं यूरिन, फिर भी हम जा रहे हैं. वेट लॉस. 3 main things to diagnose. You can ask this leading question to anyone, that do you feel thirsty all the time? Do you go to the washroom every time after 1 hour, 2 hour, half an hour? Any weight loss during 6 months or 3 months? Leading question. Leading question means asking the patient. Another one symptom is there, but it's not classical symptom. Do you know? Why? Why not polyphagia? Why not polyphagia is a symptom but not a classical symptom? because he may be He may be what? a foodie. Huh? A foodie. Not like that. It can happen. Like polyphagia, too much food. No. Why not polyphagia is a classical symptom. It can align with other symptoms like bulimia or No. Nothing like that. Anyone else? Why not? Polyphagia is a classical symptom. It's a symptom. Obviously, it's a symptom. But why not a classical symptom? Only these 3 are classical symptoms. Anyone? Metabolism, high हो सकता है. नहीं. Anyone else? We can measure these things now. Weight loss. We can measure the polyuria. We can measure the polydipsia. Can you measure the polyphagia? Anyone? Is it subjective now? That's why it's not a classical symptom. The only sole reason is we cannot measure it. All things are measurable. These 3 are measurable. It's very much important to diagnose. In any setup, rural or urban or referral, in any setup, these classical symptoms. We already know the classical symptoms plus RBS. RBS means random blood sugar. Anytime, without fasting or with fasting or anytime. Just like one patient came to you done a random blood sugar test. A random sugar test, it's a random blood sugar test. It should be greater than 200 milligram. For asymptomatic patients, patient without any classical symptoms or symptoms, that is FBS 1 to 6 milligram. Okay? Or after giving the 75 gram of glucose, our OGTT test, 2 hour postprandial means at that after the taking the sip, 2 घंटे के बाद में जो हम लेंगे ना सैंपल, most probably that was his 5th sample. There should be more than 200 milligrams. The best method I prefer, everyone prefer, is HbA1c. What is HbA1c? Anyone? Do you know what is HbA1c? What is the full form of HbA1c? Anyone? Stand up and tell. Acylated? पहले से बोलो, फिर से बोलो. Acylated or glycolated? Glycolated. That is written already here. Glycolated hemoglobin. Why it is best? There must be a reason now. Why it is best?
Anyone? Average. Average of? Gives the average. ठीक है, बैठ के बोलो, बैठ के It बोलो. gives the average blood sugar level. Because RBCs have one Level of what time? What duration? I need a duration. 120 days. 120 days means 3 months, no? Yeah, 3 months. And Average of 3 months. and you are correct. And RBCs die within 120 days, so it gives the average glycosylated hemoglobin. what is the practical benefit of it? Other reasons are must be there, no? Also, like it's the most accurate because random blood sugar may be. That's okay. But any other reason other than it's a average of 120 days? Any other reason? It can be done anytime. To wake up the patient and tell him to give the blood. It is done by single test only. Anytime, without fasting, with fasting, anytime. Right now, you can also give your glycosylated hemoglobin, means the blood sample. And we can find out the average of almost 120 days or 3 months. Okay. The last one, postprandial values are not useful for diagnostic DM. It is not means what we can say. It is not important nowadays that postprandial values carrying any much value towards the diagnostic DM, but it can be useful to monitor the patients. If we put the patient with metformin or insulin or any kind of medication, we have to monitor now the medicine is working or not. We have to find out if it is working or not, or it is getting any trouble, hypoglycemia, or not working properly, the blood glucose is still high. So we have to do the postprandial at that time, but not for diagnostic purpose. This is very important. Write it down as this part. Write it down as a impaired glucose tolerance, IGT, not pre-diabetes. IGT. Classical symptoms may lie, maybe for due to other reasons, but these things will never lie. Most important part. See, in an urban setup, where HbA1c is present in a lab, we have to do two things to diagnose. One is MBBS plus HbA1c to diagnose T2DM in a referral unit or where HbA1c is present. ABS and HbA1c. So, in a setup, in a lab or in a hospital or in a clinic, where is HbA1c present, you have to do two things. One is ABS, the fasting one. Fasting one, and another one is HbA1c. If HbA1c is less than 5.7 and ABS you can think 96. This patient is diabetic or not? Or normal? Tell me. Normal or IGT or the diabetes? Which one? ABS is 96. Is it normal? How many people think is it normal? Please raise your hand. अच्छे से करो. Everyone, except you. That's fine. You don't think also that is normal. ठीक है. What do you think now? What do you think now? And don't tell pre-diabetes. Told you na, impaired glucose tolerance, IGT. Pre-diabetes is a kind of layman term. We have to go IGT. What do you think now? 150 and 8? Sure. How many of you think that it's a diabetes? How many of you? Still people are confused. Chart is there now, find it out. Diabetic or not? Diabetic. Yes, it is diabetic. So two simple things.
By doing these two simple things, you can diagnose what? Diabetes. For universal cases, for anyone. If the hospital does not have that HB1C facility, what will you do? In rural villages, in your community centers, OGT you can do. Simple. Wherever you can do HB1C, do the HB1C, the preferred one. If not available, then do the what? Postprandial one by doing the OGTT. Right? We have to do again the math or what? Like 60. What do you think now? Diabetic, pre-diabetic, or means impaired glucose tolerance or normal? What do you think? Sure? Yes. Simple na? It's absolutely simple. But you have to remember this chart. Write it down. Another important thing. It's for the pregnant women. So see, Deep Sea guidelines is a national guidelines followed in the India for universal screening of GDM. A patient comes to you at 10th week of our pregnancy. You have to do that is the first antenatal visit. Now, whenever the patient encounters a pregnant woman in the community comes to you for the first time, it's a first antenatal visit. So you have to screen all the women for what? For what? GDM. So you have to do that OGTT test. You know how to do it. Now the results comes at what? After 2 hours, postprandial greater than 140. So you can term as a GDM. What if the patient comes positive, but not 140, it's 210? Then what? It can be 210, it can be 300, it can be 180, 181. So in this case, if the glucose level crosses the mark of 200, that means the patient has already got the diabetes before the what? Pregnancy. In any time of pregnancy, you do the OGTT test, and there is a blood level is greater than 200. It is the patient is already diabetic before the pregnancy. Fine. Do you understand this language? The benchmark is 200 for the pre-GDM, na? And for normal GDM, it is 140. What if the results come negative, less than 140? Most of the time it's less than 140 now. So we have to do it again. Again when? No, during the time of 24 to 28 weeks. See, again, 24 to 28 weeks. Then again it become negative or positive, as same. If it causes 150 or 140, then it is what? GDM. If it's not, then it is normal. What? उसमें भी same ही होगा. If it causes 200, then again it is pre-GDM, na? Now, if the patient comes to you for the first time at 24 weeks, PUG is 24 weeks. Later, some patients come late, not at the beginning, at the last moment, like 24 weeks. Then you have to do twice with a gap between 2 weeks. We have to do 2 times now. So if the patient comes at 26 weeks, PG is less than 140, means normal. Do you understand? Any confusion? 140. So if we have to check it twice now. So again we will check it after 2 weeks. There should be a gap between gap of 2 weeks.
Minimum gap of 2 weeks. 20 days. The patient is normal or not? The patient is normal or not? Getting 140 twice. Normal or not? Normal. We have to check her again or not? Done na? Done for the case na? That's it is already negative. Okay. What if at the time of testing OGTT, the patient vomits within 30 minutes? Patient ke vomit na within 30 minutes. So if the patient vomits within 30 minutes, we have to tell her that come again tomorrow. The test is done for today. Right? After 30 minutes, we can do the test. It is important. And another thing is important that the time between which she have to drink the whole mixture. What is the time? I told you earlier. The complications of diabetic DM, diabetes mellitus. One is diabetic retinopathy, cerebrovascular diseases. Just write the headlines. No need to go in depth. Diabetic nephropathy, diabetic peripheral neuropathy, diabetic foot, cardiovascular disease, cerebrovascular disease. This concept. If you diagnose a patient with T2DM, tell her to visit as soon as possible towards the ophthalmologist to check her eyes or his eyes. T1DM में नहीं लगता. T2DM में हम लोग उनको बोलते हैं कि आप जाके एक बार आंखें दिखा लो अपनी. हमको तो पता नहीं ना कब उसका शुगर हुआ. हमने तो पकड़ा है अभी. It can be 2 years earlier, 1 year earlier. ठीक है ना? We have to tell them go and check the ophthalmologist to find out if there is any diabetic retinopathy or not, because the patient may go to blindness or visual loss. It's your duty. You are liable if you are not giving that line that visit ophthalmologist, he can sue you later. The management of T2DM and its complication. You will mostly learn it about it on the medicine part, but basic idea is 3 things. One is lifestyle modification. If the patient is taking like unhealthy food like fast foods, lots of chicken or carbohydrate, you have to stop that. Like fiber-rich foods he has to take, vegetables, brown rice, brown bread, whole wheat. Then he can do exercise 5 days. In a week he can do exercise for 5 days, like 30 minutes of walking, 30 minutes of cycling, swimming, whatever he is comfortable with. Then drugs. Usually we don't give drugs whenever the HbA1c is less than 7. We don't give drugs. We strictly we stick to the balanced diet. By balancing the diet, we can control for a while. We can make it control for a while, less than 7. So do not need to panic. But if it is greater than 7, then you have to think what medication we will give. Like we can give metformin, glipizide, pioglitazone, dapagliflozin, sitagliptin, acarbose. You will read about in the medicine part. Then glucose monitoring is also important part. We are giving the medication, I am eating vegetables, I am taking the medication, but we are not checking that medication is working or not. Postprandial is greater than 300, 400, patient go to DK, diabetic ketoacidosis, and different kind of things. So we have to monitor. We can monitor by many things like HbA1c. After 2 or 3 months, we can see the average value. It is increasing or not, like this HbA1c. It is greater than 7 or greater than less than 7. And then FBS and PPBS. We earlier learned that PPBS is usually used in monitoring and fasting also. Now the question. Which of the following mechanism is predominantly responsible for an increase in the fasting glucose level of the patient with type 2 diabetes mellitus? Think. Which of the following mechanism is predominantly responsible for an increase in the fasting glucose level for a patient with type 2 diabetes mellitus? It is answer A. Increased hepatic gluconeogenesis. What is gluconeogenesis? बोलो आप बोलो.
आपका नाम क्या? मधुर में बोलो। ग्लूकोजेनेसिस क्या है बोलो। Formation of carbohydrate from what? From Formation of carbohydrate from non-carbohydrate things like what? Lipids and ठीक उतनी का. In type 2 diabetes mellitus, increased fasting level of glucose is predominantly due to the increased hepatic gluconeogenesis. ठीक है सर? आपके लीवर से वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं ना फास्टिंग. क्यों? इन द पोस्टपंडियल पीरियड देयर इज रेज इन द पेरिफेरल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. आपके पेरिफेरल कहाँ है? ये हाथ पे रही तो पेरिफेरल है ना. लिम्स आर पेरिफेरल ऑर्गन, पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. Due to insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, there is a reduced peripheral uptake of glucose by insulin sensitive tissues like liver and skeletal muscles. क्या है इसका मतलब? कोई बोलेगा? क्या समझ में आया? What do you think? क्या लिखा है? Due to insulin resistance in type 2 diabetes mellitus. ठीक है ना? उस insulin is there in the body, but it is resistant ना. It is not working properly due to the receptors are not working properly, or the receptors are less. So there is a failed glucose uptake by liver or skeletal muscles. That means if the liver or the skeletal muscle cannot take the glucose to the cells, it cannot convert glucose to the glycogen. So the glucose will roam around. Where? In the blood system in the blood. So what? There will be increased level of simple. वो कहीं जा ही नहीं पा रहा है, वो सेल के अंदर जा ही नहीं पा रहा है, सेल के अंदर जाके कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है ग्लाइकोजन में. तो वो क्या करेगा? तो घूमेगा ही. आप जब सैंपल लोगे तो घूम रहे हैं. लो आप उसका सैंपल लिया, उसके बाद तो ज़्यादा ही होगा ना. बस इतना ही खत्म. तो कन्फ्यूजन है क्या कुछ? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज? What do you think now? This patient is normal or not? Fast antenatal visit for the pregnant woman, but the OGTT is less than 80. Is it normal or not? Sure. Oh. What will do? What will tell her? She has to come again at the time of 24 to 20 weeks. What if greater than 150? Not what? Positive for what? What if greater than 300, 310, 400? Classical symptoms? Any queries? 7 से कम हुआ तो ये बीच वाला याद रखने से भी हो जाता है ना. आप लोग क्या डायग्नोस कर पाओगे? कोई भी पेशेंट को, घर वाले को कर पाएगा क्या? कौन कौन का डायबिटीज था बोला योर रिलेटिव्स का? ठीक है, क्या करना है मॉनिटरिंग के लिए? कौन सा करना है? व्हाट टू डू फॉर मॉनिटरिंग? दैट्स वर्किंग, मतलब मेडिसिन इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट. और फिंगर में कितना आएगा वो प्रोसेस नहीं चाहिए मुझे. कितना आएगा ब्लड ग्लूकोज, कितना आएगा? व्हाट विल बी द लेवल वेयर यू विल बी सेटिस्फैक्टरी दैट माय मेडिसिन्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली, व्हाट एवर ही इज टेकिंग, और मेडिसिन टेकिंग और नॉट टेकिंग, बट इज गुड. नॉर्मल लेवल सर्च कर. नो यू नॉट नॉर्मल नहीं आएगा. 180 से नीचे आना चाहिए. ठीक है ना? It should be less than 180 in case in the patients who are taking medications or dietary only ना 180. और डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसी से? MBBS और अर्बन सेटअप में आप इस मेडिकल कॉलेज में है, कौन से टेस्ट कराएंगे? 2 टेस्ट हैं. MBBS HbA1c और HbA1c नहीं हो तो
OGTT मीन्स पीपी ना, 2 घंटे वाला पीपी है ना, OGTT तो पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो कौन सा वाला पेशेंट के लिए इजी? अब बैठ जाओ, इसमें क्या क्या पता है बोलो, डिटेल्स बोलो, डिटेल्स बोलो। 200 आएगा तो क्या होगा? व्हाट इफ द पोस्ट पीपी इज 200 ग्रेटर देन 200? डायबिटीज कब से है? ग्रेटर देन 1। नहीं, कब से? प्रेगनेंसी के पहले है कि बाद? कब से है? व्हाट इफ 180? हाँ बोलो। व्हाट इफ 180? अब तो लिमिट क्या है? 140 और 140 टू 199, 199 या 200। उसमें क्या होगा? GDM होगा। उसमें क्या, किस में दिक्कत नहीं आएगी? ऑर्गेनोजेनेसिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिटस बड़ा हो सकता है मगर देयर विल बी नो डिफेक्ट, ठीक है। व्हाट इफ इट्स लेस देन 140? नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे उनको? हाँ, उससे पहले तो आएंगे, उससे पहले तो आ सकते हैं। वो एक बार आया, first she come at 10th of week, then she have to come for other reasons, 15 or 16 weeks, 20 weeks, but she must to come at 24 to what if the patients come for the first time at 24 or 25 weeks for the first time after 2 weeks? पता नहीं, जब भी मिले उसको तो करो। पहली बार मिले तो उसको करना ही है। प्रेगनेंसी कन्फर्म है तो करना है ना। जब भी आए हो 24 वीक में आए तो उसको करो। उसके बाद कितने वीक की गैप में करेंगे? एक गैप भी तो होना चाहिए ना। आज कर लिया, 2 बार करने नाम के लिए फिर से कॉल कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ठीक नहीं आएगा ना। एटलीस्ट 2 वीक्स का गैप होना चाहिए। 3 वीक्स के बाद भी हो सकता है ना, 2 वीक्स का गैप होना चाहिए। उसमें अगर 300 आ गया तो क्या करेंगे? एक पेशेंट 28 वीक्स में आएगा तो क्या करोगे? स्पेसिफिक 28 वीक्स में, वो तो एकदम बॉर्डर पे आया है ना, उसको क्या दोबारा करेंगे? उसके लिए सिर्फ एक बार ही होगा, स्पेशल केसेस, ठीक है ना। अगर 26 वीक में आए तो फिर से कब करेंगे? 2 वीक्स बाद 28 वीक्स। अगर वोमिट कर दिया तो क्या? नेक्स्ट डे उसको बोलेंगे कितने मिनट के अंदर खाना है? वो 5 मिनट्स के अंदर। क्या ऐड कर सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए? आइस एंड लेमन। आइस एंड लेमन ही क्यों नहीं थोड़ा कोक मिला देते हैं, थोड़ा माउंटेन ड्यू, फिर चॉकलेट, कुछ भी। हाँ, उससे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है ना उसमें, तो वो क्या करेगा? फॉल्स दिखा सकता है ना, उस बढ़ सकता है, टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा। आपने जो मेहनत किया आधे घंटे 3 दिन से, उसको 150 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं, उसको कोई कुछ नहीं कर रहे, तो लेंथी प्रोसेस होता है ना। वो फिर से क्लासिकल सिम्टम प्लस आरबीएस क्या होता है? फिर से बोलो। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट मतलब क्या? बोलो। हाँ, तो उसको एपीएस करने से क्या हो जाएगा? क्या एक से बोल देंगे? क्या बोल सकते क्या? एपीएस अगर 126 आ गया तो नेक्स्ट टेस्ट क्या कर सकते हैं? दूसरा में किया ही नहीं उसके साथ, पीपी भी नहीं कि एसबीओसी नहीं। कभी लोग आ जाते हैं ना कि मैंने सिर्फ एपीएस कर लिया, आप डॉक्टर वो पकड़ लेंगे कुछ भी। 126 से ज़्यादा गए एपीएस, आप उसको क्या बोल सकते हैं? क्या करो? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? एसिम्प्टोमेटिक है, एपीएस 120, 130 आया, 150 आया, उसको नेक्स्ट क्या बोलेंगे? कौन सा टेस्ट बोल सकते हैं? वो एक अगरतला में रहता है, अगरतला में रहता है भाई, सिंपल है ना। जंगल में रहेंगे तो कहेंगे मैंने वायरस स्पेशलिटी इज नॉट अवेलेबल। सो कंफर्म होने के लिए आपको एसबीओसी कराओ। पीबी भी कर सकते हैं ना। पीबी में अगर दिक्कत वाला हो, पेशेंट खाया कि नहीं ठीक से, वोमिट कर दिया कि नहीं, ठीक से किया कि नहीं लेप्टोप्टोसिस ने, एसबीओसी में हो वैसा दिक्कत नहीं है, ईजी है ना। पोस्टमॉर्टम कब यूज़ करते हैं हम? Why we use postprandial bolus? What is the importance of postprandial bolus? इधर लिखा है, पढ़ के ही बता दो कोई। For the and follow up। देखना पड़ेगा ना मेडिसिन जो मैं दे रहा हूँ और नहीं भी दे रहा हूँ वो काम कर रहा है कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा ना। आप पढ़ो सेकेंड लाइन, OGTT कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज द। आप एफबीएस किया,
एफबीएस में देखा कि सिर्फ पेशेंट एफबीएस करके आया, उसमें देखा कि वो बॉर्डर लाइन पे है, मीन्स बीच में है, तो आप उसको सोचेंगे नहीं कि करा ले तो OGTT, वो विलेज में है, HbA1c भी नहीं है, तो हमारे हाथ में क्या है, OGTT है, सिंपल टेक्निक है। एन एड्रेस ग्लूकोज तो आपके पास रहेगा ही ना, लैब में रहेगा ही, सोचता हूँ कि है उसके पास, तो कर लेते हैं। HbA1c नहीं है तो क्या कर पाएगा, तो हम IgT को कंफर्म करने के लिए कि IgT है कि नहीं, या फिर उसको शुगर हो चुका कि नहीं, या फिर पेशेंट आके हिस्ट्री देता है कि इज देयर इज हिस्ट्री ऑफ IgT 1 or 2 years ago, it's a long time now, so you have to find out from the beginning, so we can do OGTT. Or for the diabetes, to monitor and follow up कि मेडिसिन का जो हमने मेडिसिन दिया वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और चौथा वाला लाइन इम्पोर्टेंट, क्या समझे, कौन सा गाइडलाइन यूज करेंगे हम, कौन सा फॉलो करेंगे। बहुत सारे गाइडलाइंस है, ACOG का भी गाइडलाइन है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी है, मगर इंडिया में एक स्पेसिफिक फॉलो होता है। डिप्सी में क्या करता है, पहले से बोल। डिप्सी में एक पेशेंट आया, नहीं खाता देख के नहीं भाई, ऐसे बोलना, समझ रहा हूँ, बोलना भूल गलती होने दे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी गलती कर, दो है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। नहीं प्रोसेस बोल, कितने से पॉजिटिव कितने से नेगेटिव। 140 ना पहले से बोले एक पेशेंट आया, उसके बाद क्या करूंगा मैं, आरबीएस देखेंगे। अब तक आरबीएस पढ़ा है क्या हमने, आरबीएस तो एक लाइन में था शायद, देयर इज ओनली वन लाइन अबाउट आरबीएस, 1 or 2 लाइन। OGTT देखेंगे। हाँ OGTT और आरबीएस के सेम है, नहीं सर, तो क्या देखेंगे, OGTT देखेंगे। अगर वैल्यू डिप्सी गाइडलाइन में फास्टिंग नहीं चाहिए, वो भी एक बात है, फास्टिंग नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप बोलते रहो। सर अगर वैल्यू 200 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो प्रेगनेंसी से पहले से उसको डायबिटीज की थी। हाँ, उससे क्या दिक्कत हो सकती है बच्चे को, सर वो हेवी हो सकता है। नहीं भाई वो तो हेवी होगा ही, वो तो GDM में भी हेवी होगा, लेवल भी अदर ऑर्गेनोजेनेसिस के कोई फ्री रेडिकल्स घूम रहा है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे, तो बेबी का एनोमली हो सकता है कि नहीं। पहले से डायबिटीज है तो बहुत रिस्क है ना, उसका ऑर्गेनोजेनेसिस में दिक्कत हो सकता है, तो एनोमली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोलो, अगर 140 से शुरू कर तो 200 पे करता है, 140 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, फिर उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। हाँ क्या होगा उसका, डायग्नोसिस बोल, ट्रीटमेंट बाद में। सर अगर 140 से ज़्यादा है तो मतलब वो डायबिटिक फेज में है। हाँ GDM में, हाँ GDM में डायबिटीज तो वो भी है। सर, तो उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस होगा, लेकिन अगर जैसे 24 मतलब नेगेटिव आया तो हम उसको रीचेक करने के लिए 2 बार करवाते हैं, या एक बार तो हमने कर लिया ऑलरेडी अभी, और दूसरी बार कब, अगर जैसे 2 केस अगर लेट आई 24 या 26 वीक्स में आई, 2 वीक्स का गैप बना, सेकंड टेस्ट और 24 to 28 वीक्स में होगा। हाँ 2 दिन का मतलब 2 के, हाँ अगर एक्सेप्शनल केस है अगर वो 28 वीक में या हाँ। 27 में तो सिर्फ एक बार होता है। हाँ, ताकि उसका निकल चुका है ना अभी। तो सर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉलिटिकल का क्राइटेरिया क्या है वो बोल, वो मुझे वो व्हाट्सएप 40 से ज़्यादा आएगी तो 40 से ज़्यादा आएगा तो 140 से ज़्यादा आएगा तो सर पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव का मीन क्या है, मीनिंग तो होगा ना, ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है ना, वो तो कोई टेस्ट नहीं करेंगे मेरे पॉजिटिव, GDM होगा, डायबिटिक नहीं, गेस्टेशनल डायबिटिक होगा, व्हाट सही से यूज करो। उस वक्त डायबिटीज बोल दे तो नंबर काट देगा ना, तुझे मालूम है आंसर, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है, तो तू डायबिटीज बोल रहे हैं, सही वर्ड। सर जेस्टेशनल डायबिटीज होगी, अगर होगी तो उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग हाँ ट्रीटमेंट होगा, या फिर हम देखेंगे मॉनिटर करेंगे ना, कुछ कर सकते कि नहीं, इंटरवेंशन रेडी के लिए, या फिर सिर्फ खाने से ही हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद सर अगर नेगेटिव आया तो कैसे करेंगे, और अगर 200 से ज़्यादा है सर तो जेस्टेशनल डायबिटीज होगी, वो ऑलरेडी था, वो पहले से डायबिटीज था। वो ऑलरेडी GDM इज ए टेम्पररी स्टेट, वो प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो सकता है, मगर कहीं कहीं वो रह जाता है, तो हमको उसके बाद भी टेस्ट करते हैं, वो दूसरा चीज़ें करते हैं हम लोग, एक सर्टेन वीक के बाद फिर से करते हैं, करके देखते हैं कि वो स्टेट जब था टेम्पररी वो परमानेंट हुआ कि नहीं, मैंने परमानेंट हो गया कि नहीं है, या फिर यूजुअली नहीं होता है परमानेंट, मगर कभी तो हो सकता है ना, वही बस। आप बोलो, हाँ हाँ मार्क्स खोलो, और इन्होंने जो बताया वो फिर से बोलो, द डिप्सी गाइडलाइन, टेल मी अबाउट द डिप्सी गाइडलाइन। ठीक है बोल, पेशेंट एक प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट आया, उसके बाद क्या करेंगे,
OGTT प्रोसीड्यूर करेंगे हैं उसके बाद वन 140 से ज़्यादा आया तो वो GTM पॉजिटिव, और अगर 200 से ज़्यादा आया तो वो पहले से डायबिटिक है और प्रेगनेंसी के बाद GTM फेस कर रही है। मैंने वही है फिर GDM है उसके GDM फेस नहीं करा GDM पहले उसका बात करें। अगर नेगेटिव आया नेगेटिव आया तो कितने वीक के बाद फिर से ट्राई करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कितने वीक मिनिमम 2 वीक्स। कल भी तो करा सकते हैं ना, करने के लिए तो कल भी कर सकते हैं, करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। मिनिमम 2 वीक्स, गिव हर सम टाइम, गिव हर बॉडी सम टाइम टू रिएक्ट। हाँ उसको उससे कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है एग्जाम के टाइम बोलना है। अगर बॉर्डर लाइन में आई लाइक 27 या 28 वीक्स में आई तो आज ना 27 में 28 ही करना से ठीक है वही इसके बाद तो तब से एक ही टेस्ट होगा तो हम वहाँ पे 2 वीक्स का ड्यूरेशन मतलब 2 वीक्स का गैप है, एक बार ही कर लेंगे जो ना इसमें हो जाए, ठीक है। तो क्या उसमें क्या दिखेंगे, सेम ही दिखेंगे। कोई कन्फ्यूजन है? अगर 30 मिनट्स के अंदर वोमिटिंग करते हैं तो क्या वोमिटेड आउट फिर से करेंगे ना। अगर 30 मिनट्स के बाद किया तो मैंने अगर 30 मिनट पी लिया 5 मिनट के अंदर, 30 मिनट हो चुका है इसका खा के, 45 मिनट से वोमिटिंग कर दिया, बेटी है अच्छी बेटी है घूम मज़े कर रही है मगर अचानक से वोमिटिंग कर दिया तो क्या करेंगे? उसको फिर से करना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं करना पड़ेगा? करना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको एब्जॉर्ब हो चुका है ना 30 मिनट्स में, यूजुअली हो जाता है ना। तो हमको हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट्स के अंदर अगर वोमिटिंग कर दिया तो इसका मतलब क्या, वो 75 ग्राम्स नहीं गया, ठीक है ना। बॉडी के अंदर मे बी 60 ग्राम गया है तो 60 ग्राम गया तो कम होगा, उसमें पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, कम आ जाएगा, बस खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको क्राइटेरिया बोलिए कब मैंने HbA1c में कब बोलेंगे IGT, कब बोलेंगे डायबिटीज और कब बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है बोलिए। गलती होने दो, कोई दिक्कत नहीं, गलती होने दो। प्रेग्नेंट वुमेन आया है उसके बाद देन व्हाट विल डू, क्या देंगे हम उनको 30 ml वाटर के साथ क्या देंगे? बोला ना IGT प्री डायबिटीज वाला, ये वाला याद रख लो कॉलम, जैसे कि फास्टिंग में 100 to 125 ये वाला रखना है। इससे ऊपर गए तो अपर लिमिट से ऊपर गए तो डायबिटीज क्रॉस कर रहे हैं, 100 से नीचे गए तो नॉर्मल है। सेम विथ OGTT ना, 140 से नीचे गए तो नेगेटिव है। जो भी GDM में अभी परखा है हम लोगों ने 199 से ज़्यादा गए तो 200 हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, मैंने पढ़ा है ना अभी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं बोलो? अरे ये नहीं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ T2DM, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? बेसिक आइडिया रखो, तो ज़्यादा भी नहीं है ना। बोलो बोलो बोलो, सही है सही है। वो लिमिट बोलो, कब बोलेंगे, मैंने क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, कब बोलेंगे डायबिटीज है कि नहीं किसी पेशेंट को, और उसका रेंज है जो मैंने अब तक पढ़ा है वो चार्ट बोलो, एक एक बोलो। कौन 2 टेस्ट या 3 टेस्ट 4 टेस्ट कितने करना है? एंड HbA1c विथ व्हाट क्वेश्चन है? 2 टेस्ट करना। MBBS एंड हाँ अब बोलो। विथ MBBS भी चाहिए मुझे, एक से नहीं होगा। IGT का फुल फॉर्म ठीक है, हम प्री डायबिटीज नहीं बोलते ना, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। अच्छा ये वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो तो इधर भी आ सकता है ना। प्री डायबिटीज क्या ऐसे सुना जाता है कि वो डायबिटीज का जाहिर है, हो गया है एक स्टेप आगे। IGT में क्या है, क्योंकि वैसे वो तो बैक भी कर सकता है ना, उसको अगर डाइटरी कंट्रोल अच्छा कर लिया तो नॉर्मल भी तो आ सकते हैं ना। अब प्री डायबिटीज में सुनता है कि हाँ वो ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे तो नहीं आ रहे ना। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस इज द राइट वर्ड।
अब बोलो। और व्हाट अबाउट OGTT? 142? आप क्या डायग्नोसिस कर पाओगे? किसी अगर रैंडम ने पूछ लिया कि मेरा शुगर है कि नहीं, बोल पाओगे ना? सिंपल है, आप लोग डायग्नोसिस करो पहले ट्रीटमेंट नहीं, पहले ठीक से डायग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट हो जाएगा ना। डायग्नोसिस इज द मेन पार्ट।